Hello guys, welcome back to the channel. And in this video, we're going to talk about all the MCQ questions from the CBSE 2003 economics paper. And as you can see, the series that we're going to solve is 58.5 by 1, the set 1 of this series. If you are new to the channel, then hit the subscribe button and the bell icon to receive notifications whenever a new video is shared. You can see the economics papers have started coming in for your preparation and last minute revisions. Do check them out. Without further ado, let's get started. Here we'll cover the MCQs one by one, and not only that, we'll discuss them in detail. So discuss the explanation भी discuss करेंगे ताकि तुम लोगों का रिवीजन भी हो जाए साथ ही साथ. चले आते हैं पहले क्वेश्चन पे जो है सेक्शन ए का नंबर 1. Money is an asset which can be stored for use in the future. In light of the given statement, give the function of money. So यहाँ पर डायरेक्टली है ये स्टोर ऑफ वैल्यू का बात किया जा रहा है फ्यूचर यूज के लिए. तो ये दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 मार्क सिक्योर्ड फॉर यू. चले आते हैं नेक्स्ट वाले में. Considering the depreciation of Indian currency in the international market, the Reserve Bank of India has decided to purchase Indian currency in the open market. This represents dash exchange rate system. इसको समझ लेते हैं. यहाँ पे राइट हैंड साइड में चले आओ. In managed floating exchange rate system, with the help of market forces of demand and supply, exchange rate is determined and competent authority, that is the country's central bank, जो इंडिया में रिजर्व बैंक है, intervenes so as to maintain the exchange rate within a specific range. Central bank also keeps reserve of foreign exchange within the targeted value. Managed floating exchange rate is also called as dirty floating. तो यहाँ पे मैनेज फ्लोटिंग है आंसर, लेकिन डर्टी फ्लोटिंग भी जान के रखना है. अगर ऑप्शन चेंज कर दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डर्टी फ्लोटिंग भी सेम चीज ही है. तो यहाँ पे रिजर्व बैंक कंट्रोल करती है एक रेंज के अंदर ताकि करेंसी का वैल्यू रहे. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. Statement 1, in a two-sector economy, consumption expenditure and investment expenditure are the two components of aggregate demand. ये सही है, this is true. Statement 2, aggregate demand curve always start from point of origin with a positive slope. This is incorrect, not always the case. चले आते हैं explanation में. In a two-sector economy, there is only firms and households, making them only consumption expenditure from the household and investment expenditure from the firms to form a part of aggregate demand. So this is why statement 1 is true. But statement 2 is false as aggregate demand curve has a negative slope. तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप की बात की गई है जो कि इनकरेक्ट है. ठीक है, नंबर 4 में चले आते हैं. डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ. नाउ यहाँ पर ऑप्शन 1 में सिर्फ करंट अकाउंट का बात किया गया है, ऑप्शन 2 में सिर्फ कैपिटल अकाउंट का. ऑप्शन सी विल बी योर आंसर क्योंकि ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसीट्स तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए, और ऑब्वियसली पेमेंट्स अगर ज़्यादा है तभी डेफिसिट होगा. सो ऑप्शन सी इज योर आंसर. Autonomous payments and receipts, I hope you understand, these are due to the business transactions and these are not due to the balance of payment condition of a country. ओके, चले आते हैं नंबर 5 में. यहाँ पे करेक्ट पेयर ढूंढना है. करेक्ट पेयर, वेजिटेबल्स ग्रोन इन पर्सनल गार्डन are non-marketing activity, which is true. This is correct. A car used as a taxi is a consumer good, which is wrong. An air conditioner used by household is a capital good. That is also incorrect. And scholarship given to students by government are factor income. This is also incorrect. So that is why the first option, first pair is correct. Your vegetables grown in personal garden are non-marketing activity. ठीक है, और क्वेश्चन में चले आते हैं. टेबल को कंप्लीट करना है यहाँ पर. वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, फार्मर, बेकर और रिटेल सेलर है. तीनों का यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऐड दिया हुआ है. ढूंढना है मिसिंग फिगर्स को. सबसे पहला अगर देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख लो, ये याद रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस वैल्यू एडेड होता है. ठीक है, माइनस मत कर देना. सो पहला वाला आंसर होगा यहाँ पर 4000. ठीक है, सो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4000 होगा. 2000 प्लस 2000 विच इज 4000. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज डन. फिर चले आते हैं रोमन 2 में.
रोमन 2 टोटल जो हो जाएगा दैट विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज थ्री. सो 6000 प्लस 4400 इज 10400 विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 10,400 ये भी हो गया. अब चले आते हैं नंबर 3 में. यहाँ पर ऑलरेडी 400 दिया हुआ है और 4,400 दिया हुआ है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों का डिफरेंस होगा विच इज़ नथिंग बट 4,000. ठीक है, सो ये भी हो गया. और नंबर 4 इसको भी यहाँ पे ऐड करना है, तो 4,400 यहाँ पे भी आ रहे हैं. ठीक है, सो ये हो गया. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. अगर टैली करो ये सारे आंसर्स के साथ, सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. नंबर 6 में चले आते हैं. In an economy, the investment multiplier is 4 and autonomous consumption is 30 crore. The relevant consumption function should be how much? So यहाँ पर explanation देख लो on the right hand side. K दिया हुआ है 4 which is your investment multiplier and C दिया हुआ है is 30 crore that is your consumption, autonomous consumption. Formula हमें पता है K equals to 1 by 1 minus MPC. So 4 equals to 1 by 1 minus MPC. ओके, सो इसको अगर सॉल्व करोगे 4 मतलब हो गया तुम्हारा 0.25 दैट मीन्स 1 माइनस 1 MPC इक्वल्स टू 0.25. तो MPC इक्वल्स टू 0.75. तो फॉर्मूला अगेन C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY. सो C इक्वल्स टू 30 प्लस BY आया, यहाँ पे B आया 0.75, सो 0.75Y. ठीक है, सो इन दैट केस ऑप्शन A इज योर आंसर. तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए, ताकि आराम से तुम लोग ये कर पाओ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ऑप्शन बी में चले आते हैं. और क्वेश्चन, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सेविंग्स द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड बी हाउ मच. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो. एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सेविंग्स दैट मीन्स MPS इक्वल्स टू 1. in that case MPC equals to 1 minus 1 that is 0. So option D is your answer. ठीक है, क्वेश्चन 7 में आते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, मनी सप्लाई इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स. ये गलत है, इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है. स्टेटमेंट 2 में चले आते हैं. मनी सप्लाई M1 रेफर्स टू एसेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये भी गलत है. तो चले आओ राइट हैंड साइड में समझ लेते हैं, क्विक रिवीजन भी हो जाएगी यहाँ पर M1 में क्या क्या आता है. Statement 1 is false as M1 does include the demand deposit with the banks, and statement 2 is false as M1 includes all these things. Number A, M1 में आते हैं currency notes and coins with the public excluding cash in hand of all commercial banks. Number B में है demand deposits of all commercial banks and cooperative banks excluding interbank deposits, where demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the depositor at any time by means of check and no interest is paid on such deposits. ये हो गई डिमांड डिपॉजिट जो डिपॉजिटर कभी भी चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकता है. पॉइंट नंबर सी में अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, where other deposits are the deposits held by the RBI, all economic units except the government and banks. RBI के पास जितने भी है. OD other deposits includes demand deposits of semi government public financial institution जैसे IDBI हो गया, FCI हो गया, foreign central banks and governments, the International Monetary Fund, the World Bank, etc. Thus M1 equals to C plus DD plus OD. ठीक है, तो ये है M1 का फंक्शन. क्विक रिवीजन में काम आएगा. क्वेश्चंस को अगर ट्विस्ट करता है तो यू शुड बी एबल टू डू इट. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. Suppose the price of 1 UK pound has increased from rupees 70 to rupees 80 owing to market forces. This means the value of Indian currency has obviously depreciated, क्योंकि अगर पाउंड मजबूत हुआ है, पाउंड यहाँ पर 70 से 80 हो गया, मतलब 1 रुपए में जहाँ पर हमें 1 पाउंड में 70 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 1 पाउंड की जगह हमें 80 रुपीज़ मिलेंगे, तो इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हो गया है. दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएटेड. चले आओ राइट हैंड साइड में. एज द वैल्यू ऑफ पाउंड इंक्रीज फ्रॉम 70 to 80, द वैल्यू ऑफ रुपी हैज गॉन डाउन एज अगेंस्ट पाउंड and we can purchase less of pound from the rupees. This is called depreciation of the value of Indian currency. Okay. पॉइंट नंबर बी में चले आते हैं. ऑप्शन बी, क्वेश्चन बी, सपोज कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई
Which of the following is most likely a situation to happen in such case, assuming other factors being constant? तो अगर इन्फ्लेशन है, कंट्री एक्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो क्या होगा? A surplus balance trade balance in country X, a deficit trade balance for country X, a rise in exports for country X to country Y, a deficit trade balance for country Y. ऑब्वियसली कंट्री एक्स में अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो उसका ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि चीज़ों का दाम अगर कंट्री एक्स में ज़्यादा है तो पीपल विल ट्राई टू इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्री वाई. इफ दे आर इम्पोर्टिंग मोर दैट मीन्स द बैलेंस ट्रेड विल बी इन अ डेफिसिट. ठीक है, क्वेश्चन 9 में चले आते हैं. Assertion full employment refers to absence of involuntary unemployment, which is true. करेक्ट है, कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है लोग अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है. ओके, और यहाँ पर जो लोग काम करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर बी में आ जाओ. अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट. ओके, तो प्रीवेलिंग वेज रेट पे जो जो काम करना चाहते हैं और जो जो काम कर सकते हैं वो सबके पास जॉब है. दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. इसका मतलब फिर से समझ लो एक बार, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है लोग अपने मर्जी से यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, वो काम करना नहीं चाहते हैं, तो उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करते. ठीक है, अगर वो लोग काम करना नहीं चाहते तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड. इसीलिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, पीपल मे बी वॉलंटरली चूजिंग नॉट टू वर्क. तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर. पॉइंट ऑप्शन ए इज योर आंसर. नंबर 10 में चले आते हैं. इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, marginal propensity to save is 0.25. What will be the value of increase in income if the investments increase by 200 crores? चले आओ एक्सप्लेनेशन में. MPS दे दिया है 0.25, चेंज इन इनकम दे दिया है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया है 200 crore. So K equals to 1 by 0.25, which is 4. So K equals to again change in income by change in investment. If you put the values, you get change in investment, change in income as 800 crore. Option D is your answer. दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट. ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि फटाफट ये सम्स को कर पाओ. चले आते हैं सेक्शन बी में. क्वेश्चन 18. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू लैंड सेटलमेंट. सो यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को रेफर किया जाएगा. देख लो राइट हैंड साइड में. According to Zamindari system, the zamindars were recognized as permanent owners of the land. The profit accruing out of the agriculture sector went to zamindars instead of the cultivators. However, both zamindars and colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. Zamindars were to pay a fixed sum of the amount collected to the government as land revenue, and they were absolutely free to extract as much from the tillers of the soil as they could. तो जितना ज़्यादा वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते थे फार्मर से वो लोग कर सकते हैं, और उसका एक फिक्स सम वो लोग गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, जमा करेंगे. तो जिसकी वजह से ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं देखी गई थी. Question 19. In the first phase of Green Revolution, output was restricted mainly to wheat and rice. फोकस था पहले जो मेन जो क्रॉप्स है उनको ग्रो किया जाए, इसलिए wheat and rice पे फोकस था. ऑप्शन बी इज योर आंसर देयर. क्वेश्चन बी. डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस. क्वेश्चन 20 में चले आते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 है ग्रेट proletarian cultural revolution was introduced in China in 1950s. ये गलत है. This is in 1960s. ठीक है. And China's growth is mainly contributed by the manufacturing sector. This is also wrong. Service sector है इसका आंसर. इसलिए both statements are incorrect. ठीक है. चले आते हैं नंबर बी में. Identify the correct statement from the following. China's economic growth it is better than that of Pakistan. Pakistan is behind India in HDI. Correct है. 1991 India adopted new economic reforms. That is also correct. One child policy norm was adopted in Pakistan. That is incorrect. It was adopted in China. Question 21 में चले आते हैं.
Dash is the apex institution which plans and evaluates policies related to the rural credit needs. That's one and only NABARD. इसका ही पूरा देख रेख है. जैसे सारे बैंक्स का एपेक्स बैंक है आरबीआई, सारे रूरल बैंक्स का एपेक्स बैंक है नाबार्ड. ठीक है. Next question, number 22. Assertion during 1980s economic growth rate of Pakistan was more than that of India, which is correct. Pakistan followed the path of mixed economic structure with equal participation of public and private sector. The reason is not correct. यहाँ पे रीजन ये है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट तो ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी दैट टाइम. So if you see here, the reason for Pakistan having more economic rate than India in 1980s was not because they adopted the mixed economic reforms, mixed economic system, but it was because India was a closed economy. Pakistan followed the path of mixed economic structure with coexistence of public and the private sector just like India. The ratio of contribution by the both sector was not equal. Okay, so India closed economy होने की वजह से Pakistan was having a greater growth rate. Next question, 23. Identify which one of the following are associated with the problem of human capital formation in India. Brain drain, correct है. सारे talent बाहर निकल जाते हैं. Low academic standards, which is also correct. Rising population is also correct. Changes in social outlook was not the reason for the problem of capital formation. So option C is your answer here. चले आते हैं क्वेश्चन 24 पे. स्टेटमेंट वन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी हैज लेड टू ह्यूज foreign direct investments flow to China. That is correct. China's rapid industrial growth was a result of its economic reform in 1981. That is incorrect. इसका reform start हुआ था not in 1981 but in 1978. So statement 2 is incorrect. Question 25. Identify which of the following is an incorrect function of environment. Okay. So यहाँ पे straight away answer है land degradation is not a function of environment. Okay. Question 26. Identify the following incorrect following. Which of the following is the correct formula for calculating worker population ratio? इसका आंसर है total workers by total population into 100. Okay, straightforward है, no confusion. And चले आते हैं last question में. Statement 1. The 5-year plan of China commenced in the year 1956, which is wrong because it started in the year 1953. And both India and China adopted socialist economy model following USSR. This is also incorrect because India followed the mixed economy and China adopted the socialist model. Okay, so both are incorrect. Option D is your answer. Hope this was helpful. अगर कोई questions हैं, do let me know in the comments box below. I'll help you out. Do share with your friends so that they can also use this for their last minute revision and cover up something that they might have missed out. Stay tuned, more such videos will be lined up, will be coming soon for your examination. Thanks for watching.